वेलकम फ्रेंड्स। आज हम फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम इस स्लाइड के माध्यम से हम फ्लो चार्ट की स्टडी करेंगे। फ्लो चार्ट एक बहुत उपयोगी टूल है हमारे प्रोग्राम राइटिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, जिसे हम फ्लो डायग्राम भी कह सकते हैं, is a graphical representation of process or system that details the sequencing of steps required to create output. आउटपुट को प्राप्त करने के लिए कुछ एक सीक्वेंस में स्टेप्स जो होते हैं वो फ्लो चार्ट होता है। उसके माध्यम फ्लो चार्ट के माध्यम से हम आउटपुट्स प्राप्त करेंगे। A typical flowchart uses a set of basic symbols to represent various functions and shows the sequence and interconnection of functions with lines and arrows. Flowchart में सिंबल्स होते हैं और उन विशेष सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को लाइन्स के थ्रू एरोज द्वारा कनेक्ट किया हुआ होता है। एंड फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड टू डॉक्यूमेंट वर्चुअली एनी टाइप ऑफ बिजनेस सिस्टम फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू मशीनरी इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन टू द फ्लो ऑफ एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन थ्रू द hiring process in a human resource department. Now, each flow chart is concerned with one particular process or system. जो भी फ्लो चार्ट होते हैं वो एक विशेष प्रोसेस से कंसर्न होते हैं। फ्लो चार्ट begins with the input of data or materials into the system and traces all the processes needed to convert the input into its final output form. Finalize flowchart symbols show the process that take place, the actions that are performed in each step, and the relationship between various steps. And we know that flowchart can include different levels of details as needed, from a high level overview of an entire system to a detailed diagram of one component process within a larger system. So in any case, the flowchart shows the overall structure of the process. Okay, so flowchart shows क्या overall structure of the process or system, traces the flow of information and work through it and highlights key processing and decision points. So now कंस्ट्रक्टिंग फ्लो चार्ट किस तरह से हम तैयार करते हैं, उसके लिए हमें देखना होगा कि फ्लो चार्ट टिपिकली यूटिलाइज स्पेशलाइज सिंबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि फ्लो चार्ट में जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो सिंबल कौन से होते हैं। Some symbols are here. First one is round edge rectangle. This round edge rectangle जिसका हम किस लिए यूज करेंगे फ्लो चार्ट ड्रा करने में। सो देखिएगा कि
A round edge rectangle represent starting and ending activities. हम फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड टर्मिनेटर्स को ट्रैक करने के लिए राउंड एज रेक्टेंगल यूज करेंगे. नाउ सेकेंड वन symbol is rectangle, and a rectangle to represent an activity or step. Steps को represent करने के लिए rectangle set का use करेंगे. Each step or activity within a process is indicated by a single rectangle, which is known as an activity or process symbol. Rectangle is known as process symbol. Now third shape is diamond to signify a decision point. अगर हम फ्लो चार्ट में डिसीजन सिग्निफाई करना चाहते हैं तो उसे डायमंड शेप में लेंगे. द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड और डिसीजन टू बी मेड इज रिटन inside the diamond, which is known as a decision symbol. This diamond is known as decision symbol. The answer determines the path that will be taken as a next step. तो डायमंड से जो पाथ होगा इससे आउटपुट का वो यस और नो के टर्म्स में होगा, तो वो उसको व्यक्त करता है. देन last one is flow lines. These shows the progression or transition from one step to another. तो इस प्रकार से देखिएगा राउंड एज रेक्टेंगल हम टर्मिनल पॉइंट्स टर्मिनल्स के लिए यूज करते हैं. स्टार्ट टर्मिनल होंगे, स्टार्ट फर्स्ट और लास्ट में जो होगा वो एंड, उसके लिए राउंड एज रेक्टेंगल यूज किए जाते हैं सिंबल्स. और प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं और ये रेक्टेंगल से प्रोसेस सिंबल कहलाता है. और डायमंड जो है वो डिसीजन सिंबल कहलाएगा. और जो पाथ्स होंगे उनको हम फ्लो लाइन्स के माध्यम से व्यक्त करेंगे. Now, main steps for constructing flowcharts. First step is define the process and identify the scope of the flow diagram. हमें प्रोसेस को डिफाइन करना होगा और स्कोप ऑफ द फ्लो डायग्राम को आइडेंटिफाई. फर्स्ट स्टेप हमारा ये. सेकेंड, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स that are to be involved in the construction of the process flow diagram. And third one is define the different steps involved in the process and the interrelationship between the different steps. Fourth step is finalize the diagram involving other concerned individuals as needed and making any modifications necessary. To use the flow diagram and continuously update it as needed. So many steps. और इसके बाद देखिएगा एक फ्लो डायग्राम. फर्स्ट मैं बता रहा था इसमें जो सिंबल्स यूज करते हैं, फर्स्ट सिंबल देखिए और लास्ट सिंबल देखिएगा. ये सिंबल राउंड एज रेक्टेंगल्स जिसमें लिखा है स्टार्ट टर्मिनेटर और लास्ट में लिखा है एंड टर्मिनेटर. तो ये राउंड एज रेक्टेंगल्स टर्मिनेटर से स्टार्ट और एंड किया. नाउ सेकेंड आप जो यहाँ सिंबल देख रहे हैं जिसमें प्रोसेस लिखा है, ये प्रोसेस सिंबल रेक्टेंगल शेप में हम वो प्रोसेस देते हैं. प्रोग्राम का प्रोसेस जो है वो रेक्टेंगल सिंबल में लिखे जाएंगे और ये प्रोसेस सिंबल कहलाता है. देन थर्ड हम चर्चा कर रहे थे
डायमंड शेप की, जिसको हमने डिसीजन सिंबल नाम दिया है। तो डायमंड शेप में जो है वो डिसीजन सिंबल है, और इसमें इसके आउटपुट्स देखिएगा, दो हैं, यस और नो। ओके, तो अगर डिसीजन यस है तो हम डाउनवर्ड, और तीसरा चौथा हम देख रहे थे फ्लो लाइन्स। तो यस एक फ्लो लाइन के थ्रू जुड़ा हुआ है डाटा से, तो ये डाटा, और नो है तो वो प्रोसेस में चला जाता है। इस तरह से डिसीजन यस और नो के अनुसार और डॉक्यूमेंट और एंटर, ये एक फ्लो डायग्राम। अब नाउ advantage of flow chart. First advantage is communication. The flow charts are better way of communicating the logic of a system to all concerned. Okay. Then second advantage is effective analysis. With the help of flow chart, problem can be analyzed in more effective way, and program flow charts serve as a good program documentation which is needed for various purposes. And efficient coding. The flowcharts act as a guide or blueprint during the system analysis and program development phase. Also, proper debugging. The flowchart helps in debugging process. And finally, the maintenance of operating program becomes easy with the help of flowchart. It helps the programmer to put efforts more efficiently on their part. Now, disadvantage of flowchart. First one is complex logic. Sometimes the program logic is quite complicated. In that case, flowchart becomes complex and clumsy. Okay, and if iterations are required, the flowchart may require rewrite completely. So it is the disadvantage for alteration and modifications. Also, as the flowchart symbols cannot be typed, reproduction of flowchart becomes a problem. And finally, the essentials of what is done can easily be lost in the technical details of how it is done. Okay, these are disadvantages of flowchart. Now, an example of flowchart. Draw a flowchart to calculate the factorial of a number n. हमारी प्रॉब्लम क्या है? फैक्टोरियल n कैलकुलेट करना चाहते हैं, और उसके लिए हम एक फ्लोचार्ट ड्रा करेंगे। तो फ्लोचार्ट ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट, जो राउंड है इस रेक्टेंगल में दिया गया है, लास्ट आप यहाँ देख रहे हैं स्टोर, दिस इज आल्सो इन राइटिंग टर्मिनल। सो स्टार्ट, program start, and inputs are here n. Input is n, so let input is n. Then in rectangle process is factor. हमने डिफाइन किया है फैक्टर, फैक्टोरियल को फैक्टर से डिफाइन किया है। फैक्टर इज फर्स्ट इज 1, फैक्टर इज 1 से स्टार्ट करना है। यू नो, if we want to find factorial of n, then 1 multiplied by 2 by 3 multiplied by 4 and then finally multiplied by m. So first number will be n. So factor is defined as n 1. Factor first number is 1,
So factor is defined as 1 and then counter is 1. Counter is 1 means output is 1. Then डिसीजन सिंबल हमें क्या दे रहा है, हम चाहते हैं इज काउंट इज लेस देन और इक्वल टू n. इक्वल टू n तक हम ये काउंट करना चाहेंगे, 1 फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए और n तक. और जैसे ही n से n+1 हो जाता है हमारा आंसर होगा नो. और नो के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट फैक्टर. ये जो फैक्टर है वो प्रिंट करवा लेंगे. तो प्रिंट फैक्टर एंड देन स्टोर. और इफ काउंटर इज लेस देन n, दिस इज काउंटर. काउंटर इज लेस देन n, और जब तक ये काउंटर n से कम है तब तक ये प्रोसेस 1 2 3 4 चलना है. सो काउंटर इज लेस देन n, देन हमें क्या करना है, फैक्टर को चेंज करना है, अल्टर करना है. फैक्टर फर्स्ट इज 1, देन फैक्टर को अल्टर करना है. और फैक्टर इज फैक्टर 1. हियर देखिए 1, ये 1 यहाँ होगा मल्टीप्लाइड बाय दिस काउंटर. सो काउंटर मीन्स 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग चलेगी. तो फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय काउंटर मीन्स 2 काउंटर काउंट न्यू फॉर्मूला इज काउंट प्लस 1. एंड देन इन दिस प्रोसेस गो टू अगेन फाइंड करिएगा, क्वेश्चन करिएगा इज काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू n. इफ लेस देन 1 ये सेम प्रोसेस यस, और इफ इक्वल टू n also and more than n then no, और then print factor. इसमें अब वो उसका मल्टीप्लिकेशन हमें आउटपुट फैक्टर के रूप में प्राप्त होगा. दिस फैक्टर, ये फैक्टर जो आउटपुट हमें मिला है वो यहाँ इफ n इज n प्लस n इज ग्रेटर देन n, काउंटर इज ग्रेटर देन n, इस स्थिति में प्रिंट होगा देन स्टॉप. तो इस तरह से हम किसी प्रोग्राम के लिए फ्लोचार्ट ड्रा कर सकते हैं. तो हमने आज स्टडी किया फ्लोचार्ट, और नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे वो एल्गोरिथम.